my name when a tree suns and rays. Once and again, telling a story lost in time. The way it starts and the way it ends. Never again making a story seem dismayed. With zero stop, just one end. How I love to embrace the future breaking out of shades from the past, still ablaze. Save your tears for the day so far away to irrigate the wilderness that's still the sea in the world, waiting to be lit, to spread over the river that's so dry and dead. Let ships there run aground, relaunch the sails. How I love to embrace the future breaking out of shades from the past, still ablaze. Seeds bear. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द स्ट्रीम। तो फाइनली अब मैंने लंच कर लिया है। अब हम लोग आर्कॉन क्वेस्ट को आराम से पूरा कर सकते हैं। भाई बहुत ही एक्साइटेड हूँ यार मैं। न्यू की एज के बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई इस आर्कॉन क्वेस्ट के लिए। यस, हमें न्यूविलेट मिल गया है। हाँ, बस थोड़ा सा लेवल अप नहीं किया है यार। ये एनिमेशन कितना अजीब लगता है गोला वाला। ये काफी सही है भाई, मुझे भी मिला। अरे क्या बात है अक्षय भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वेलकम नेज डीमन। क्या कह रहे, तू क्या मिला, क्यों मिला, कहाँ से मिला, कैसे मिला, वो जानने के लिए इसके पहले वाली स्ट्रीम देखो, नहीं तो थोड़ा सा सब्र करो, उसी की वीडियो निकालेंगे, क्लिप करके डालूंगा मैं। लाइट गई यार, ये क्या बात है। पाइमॉन ड्रैगन बुढ़ा कब बनता है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। सर्पेंट भाई वेलकम। स्ट्रीम एंड होने से अभी तक मैं एक पुल नहीं ग्राइंड कर रहा। ओह डैम, बॉन्जोर। तुम्हें भी बॉन्जोर यक्ष भाई। सर्प ब्रो एक दिन जरूर मिलेगा। आई होप वो दिन काफी जल्दी आए तुम्हारे लिए यार, काफी जल्दी आना ही चाहिए। चलो तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लोग हमारी आर्कॉन क्वेस्ट। इसे लेवल अप हम रात की स्ट्रीम में करेंगे। अरे मैं आर्कॉन क्वेस्ट के पास ही हूं। अच्छा, जमीन के अंदर घुसना है हमें। चलो जमीन के अंदर चलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको नहीं भी मिला। थैंक्स यक्ष भाई, काफी मतलब रोलर कोस्टर थे इमोशंस जब मैंने इसको पुल किया, क्योंकि जो मैंने 60 पुल सेव किए थे उनमें नहीं निकला ये। फिर थोड़े स्टारडस्ट वगैरह एक्सचेंज करके 10 पुल और किए, तब भी नहीं निकला ये। फिर मैंने मैप के थोड़े वे पॉइंट्स वगैरह खोल के किए, 160 सिंगल पुल मारा, 76 की पिटी पे निकला ये। भाई पता नहीं मैं कितनी 50-50 जीत चुका हूँ एट दिस पॉइंट। मैं ट्रैक भूल गया हूँ उसका। कितना डैमेज मार रहा है बिल्ड पे। अभी तो बिल्ड ही नहीं किया यार, अभी बस निकाला ही है मैंने। अभी बिल्ड करूंगा अच्छे से तमीज में। अभी तो बस जो पड़ी थी चीजें मैंने पकड़ा दी उसे। एक ये पकड़ा दिया, ये भी लेवल 90 नहीं है वेपन। आर्टिफैक्ट सेट ये पकड़ा है जिसमें मेरे पास सैंड्स नहीं है एचपी का, तो अभी थोड़ा सा ग्राइंड करना है मुझे इसके आर्टिफैक्ट्स के लिए। कोको के बाद सेकेंड 50-50 जीते हो। आई सी। मुझे तो फुरीना चाहिए, मुझे भी चाहिए यार। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं ना क्या करने वाला हूँ,
ये जो बैनर है ना, इसके लास्ट डे तक मैं सेव करने वाला हूँ, जितने भी प्रीमोज मैं सेव कर सकूं, फिर लास्ट डे पे मैं जाऊंगा वेपन बैनर पे। उससे हो गए मेरे पास ना होमा है ना इसका वेपन है। इसका वेपन बहुत अच्छा है भाई, दोनों में से कुछ भी मिल गया मुझे चलेगा। फिर फुरीना के लिए फुल ऑन सेविंग फेज 2 से। चलो शुरू करते हैं आर्कॉन क्वेस्ट। देखिए कहानी कहाँ जा रही है। एंड गाइस अगर तुम आर्कॉन क्वेस्ट कर चुके हो तो प्लीज नो स्पॉयलर्स इन द चैट। There's the room, and it's empty and waiting for us as promised. Navia is such a good person. चलो नाविया से मिलेंगे। Now that the serial disappearances case has been solved, no one's going to come after us for anything. Even without Silver standing Paimon- guard, why don't we stay and rest up Oh. here for a while? Even machines of Fontaine need to stop and recharge now and then. कुछ बोल रही थी मेरे बारे में, मैंने स्किप कर दिया। Oh, come on. This place isn't that bad. Besides, how often do we get to stay in an actual base? आप इतने पुल कैसे सेव कर लेते हो भाई? बहुत मुश्किल से सेव किया इस बार, बहुत ग्राइंड किए। Oh, fine, fine. मेरी 62 पे चल रही, क्या बात है। 10 पुल सेव कर तभी विश करियो। भाई इतनी एको में पाइमॉन की आवाज सुन के ना मेरे सिर में दर्द हो रहा है। गाइस मैं अभी कोऑप में नहीं लूंगा किसी को, मैं आर्कॉन क्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके नाविया, अरे दिल आ गया नाविया पे तुम्हारा। मारो नाविया को। अरे भाई सरपेंट क्यों यार? अरे रिकी वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। Excuse me, but do you know if the traveler and Paimon are lodging here? सामने खड़े हैं दोनों, मतलब खड़ा हूं मैं, दूसरी तो उड़ रही है। 82 पिटे स्टिल नो 5 स्टार भाई साहब। A blonde traveler and a chatty little fairy. Looks like I found the place. Good thing I asked the Spina di Rosula. Seems they sent me the right way. स्पीना स्पीना। अरे बंडी भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल चाल? It's an honor to meet you both. न्यूविलेट मिल गया। यस रिकी, सुबह की स्ट्रीम में। भाई इसकी आंखें ऐसी क्यों हैं? मैं रेसिस्ट नहीं हूँ। वेट, तो नाविया नहीं मिलेगी हम लोगों से? ये तो गलत बात है यार, I am not privy to the details. बहुत बोरिंग है, एक ही जगह घुमा रहे हैं। Okay. आई होप स्टोरी वगैरह अच्छी हो यार। Now that I've delivered the message, सरपीचान डोंट वरी, यू गेट 5 स्टार नेक्स्ट पुल। इट विल बी न्यूविलेट। ओके नहीं हुआ तो यक्ष फिर वेलकिन देगा उसको। तो फिर इवेंट शुरू हो गया होगा। कौन सा इवेंट? टॉक टू न्यूविलेट। नहीं मिलेगी भाई, नाविया नहीं मिलेगी। चलो न्यूविलेट के पास। थैंक्स यक्षी चान, बट आई होप इट इज डेहिया एंड नॉट न्यूवी। फर्स्ट हाफ में तो नींद आ गई थी मुझे। इतना बोरिंग नहीं होगा यार। इवेंट नहीं, वेंटी और हुताओ का। अच्छा वेंटी हुताओ में तो भी टाइम है यार काफी। चलो न्यूविलेट के ऑफिस में। भाई कितना कूल था ये। हैंड्स अप। मैं बैंक लूट सकता हूँ मैं न्यूविलेट के साथ। अबे धीरे बोल पाइमॉन। Why were you just standing there? You daydreaming or thinking something over? अरे सुजीन वेलकम टू द स्ट्रीम। चैट कौन सी चैट की तुम्हारी? स्पॉइलर दे सकते क्या? नो स्पॉयलर्स अलाउड सुजीन, नो स्पॉयलर्स अलाउड। I did send someone to fetch you. But as for what I'd like to discuss next, well,
I still have some reservations. Given that we've already made the trip here, you should just tell us. Bet you need us to help you with something, right? Okay. चलो मैं गया. Thanks for joining the stream, Ricky. I do indeed have something I'd like to ask you to do. However, you should wait until after I tell you the details, then decide for yourselves whether you'd like to help or not. भाई आवाज बहुत मस्त है नेविलेट की. पाइमॉन ऐसे क्यों नहीं बोल सकती? The situation is this. A while earlier at the It's palace. come to my attention that the Snezhnayan harbinger known as the Knave wants a diplomatic meeting with you, correct? Oh. I heard that she was originally from Fontaine, but for her to suddenly arrive here and abruptly request such a meeting like this, I sincerely advise you to refuse her invitation outright. ठीक है, आर्ले चीनो को बात करनी है इससे. I'm sure you're aware that her purpose is most likely related to Child's recent predicament. We convicted one of the Snezhnayan harbingers in a court of law, but we have yet to provide any form of detailed report on the matter. सही This बात है. does indeed provide an opportunity for Snezhnaya to put pressure on us. पाइमॉन फटी हुई चाइनीज स्पीकर. I believe we should adopt an evasive stance until we can provide a proper explanation and have a preliminary plan on how to deal with the matter. No, we shouldn't. I think we should agree to the meeting. Okay. Oh, Well, you see, we are the ones that owe an explanation. If we keep putting off the meeting, it could easily result in the problem escalating. It's like a fight between two friends. If they don't agree to see each other and talk in person, isn't it possible that the friendship could end entirely? बात तो सही कर रही है भाई. फॉर रियल गेंशिन वालों को मार देना है अगर 83 के पेटी पे लेके कुछ फालतू दिया तो. though You can do it, servant by. relations between Fontaine and Snezhnaya could be considered as friendly, it is only superficially so. You wouldn't go so far as to say that our nations are friends, as you did in your example. ओके तो स्नेजनाया के साथ कोई भी फ्रेंड नहीं है. सैड. मुझे 83 के पेटी में कचिंग मिला. कल जाओ मारो गेंशिन वालों को. It was just an analogy. An analogy, okay? Moreover, even if we were to talk in person, if we don't have sufficient information prepared, it is quite possible the result wouldn't be restored relations, but a complete falling out. भाई फुरीना की ड्रेस कितनी अलग सी है. मतलब अलग ही है इसकी स्कर्ट. I don't वो think स्कर्ट we नहीं है, should क्या है वो? overthink कोट. those possibilities yet. Even if the logic of the divine is not immediately apparent, its wisdom will only be revealed with time. किस बात के लिए इतना प्राउड फील कर रही है? Besides, you'll be at the meeting. If any problems do pop up, you'll have no problem navigating them. I must clarify that interacting and communicating with people outside of court is not my cup of tea. It seems you think too much of me. नेवलेट ने सीधा सीधा बोल दिया भाई हमसे तो ना हो पाएगा. बंटी भाई मुझे भी कुछ नहीं मिला तो मारते जाके गेंशिन वालों को साथ में. More importantly, मारो मारो. I agree to join the meeting with you. लॉल. You mean you won't come? No, that won't do. I can't go to the meeting alone. You have to accompany me. I must take you with me. फट गई इसकी तो. भाई आइस देखी इसकी कैसे छोटी बड़ी कर रही थी. Lady Farina, could there be something else regarding this matter that is being kept from me? कुछ तो छुपा रही है भाई ये. Not at all. Look, I am the Hydro Archon of Fontaine, Focalor, the god of justice who is loved and adored by many. अच्छा 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 अच्छा. डेल डन. अच्छा वेल डन कह रहे हो तो. So I only hope that justice will be served in this matter. Don't overthink it. I'll go find someone to arrange the meeting. Bro, he's so done with Furina. The time for the meeting with Nave that Lady Furina insisted upon arrives, okay? Oh, Arlecino आ गई.
be considered a diplomatic conference, I prefer to see our meeting today as an ordinary tea party. डैम, इसका कैरेक्टर डिजाइन कितना खतरनाक है भाई. I assume you see it the same way, Miss Farina? आर्लेचिनो द नेव, 4th of the 11th hour. मैं इसी इंट्रो का वेट कर रहा था यार. भाई कितनी सिनिस्टर वाइब है इसकी, पूरी विलन वाली. ये भी डर गई. Lady Farina? Oh, yes, that's right. Just like you said, a tea party. I should thank you for providing the pastries. They look delectable. Yo. To make this tea party even more lively, I've invited someone else to join us today. It's a pleasure to meet you, Monsieur Neuvillette. I was born in Fontaine, so... Monsieur, okay. To introduce the nation's revered Eudex to me. अब समझ गए कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको. Monsieur. Hello. The pleasure is also mine. कोई शर्मा रहा है भाई. First, I would like to thank the two of you. I'm often away on business outside of Fontaine, and I'm told that the children of the House of the Hearth have been well taken care of by you. आर्लेचिनो. भाई इसका डिजाइन कितना डिफरेंट है यार. मतलब फॉन्टेन के पैच में भाई सभी प्लेबल कैरेक्टर्स के डिजाइन इज लाइक जैसे किसी और गेम से लाकर यहाँ पे रख दियो. Oh, I'm not referring to when my children, Linny and Lynette, were falsely accused by you. Please don't misunderstand. Damn, ये फ्रेम. The children of the House of the Hearth are often misunderstood, perhaps due to the reputation of the Fatui. There's no getting around that. भाई ये प्योर विलन वाइब्स दे रही है. मेरे फ्रेंड को फर्स्ट विश में स्टाफ ऑफ होमा मिल गया. आई एम जेलस. उसका फोन लेके गेंशिन उड़ा दो. All I meant to say is that Fontaine has been stable in recent years. The people are well off and the children lead happy, fulfilled lives. पॉइंट क्या है तेरा? That is something truly worth cherishing, and no one wishes to disrupt such peace. ओ धमकी दे रही है बातों बातों में. Now then, you have come regarding a matter of child, correct? Well, yes. It appears the ever-busy Eudex Neuvillette doesn't wish to waste time with diplomatic pleasantries, and hopes that we can get straight to the point of our talk. Yes, as you surmised, understanding child's situation is indeed one of the goals of this trip. यार किसी को लोर पता है इसकी आंखों में ऐसे क्रॉस वगैरह क्यों बने हुए हैं? इसके हैंड्स ऐसे क्यों हैं? As we are both diplomats from Snezhnaya as well as Fatui harbingers, Child and I have always been colleagues. Were anything to happen in Fontaine, each of us would serve as the other's attorney to resolve the issue. Okay. So now, in my capacity as his attorney, I request that Child be turned over to Snezhnaya. We have a responsibility to cooperate with Fontaine and resolve what has happened to him together. The rules governing attorneys only apply before a trial has concluded. Since a verdict has already been rendered, we see the case as settled. I apologize for being unable to grant your request. An outright refusal. Very well. I respect all the rules of Fontaine's courts, just as I respect you as Chief Justice. भाई इसकी वॉइस एक्टर ने क्या मस्त काम किया है. आर्लेचिनो के उचीहा क्लान से है वो बंदी. स्पेशल शारिंगन जरूर जरूर. Okay, why don't we back up a step? भाई ऐसे लग रहा है अभी उठ के तलवार खींच देगी अपनी. You don't need to transfer Child to us. I only request to enter the fortress of Meripede to see Child and confirm his condition. अरे ये उसकी तरह नहीं लग रही आए होशिनो. नहीं यार बहुत डिफरेंस है.
It's not like you couldn't even manage to fulfill a simple request like that. Right, Miss Farina? भाई पास से देखने में तो काफी लोग डार्क मोड यूला कह रहे थे इसको, अब ये यूला जैसी तो नहीं लग रही है, अलग ही डिजाइन है यार इसका। About that. भाई मैं कैसे निकालूंगा इन सबको, न्यूविलेट निकालने में हालत खराब हो गई यार मेरी तो। अभी फुरीना भी है, आर्लेचिनो भी है। अरे स्केच, वेलकम टू द स्ट्रीम भाई। The fortress of Meripede has always been completely autonomous. Even we have no authority to interfere there, and diplomatic issues do not suffice as an excuse. इमेजिन यहाँ पे यार डुएल हो जाए न्यूविलेट और इसका। However, if you absolutely must confirm the situation of the Harbinger, I have a proposal. ओ, aqua होशिनो की आईज जैसे लग रही ना। ट्रू। 60 पर कर लिया मैंने, क्या बात है, मैं तो रात में करूंगा उसको बिल्ड। फुरीना छोटी बच्ची, इससे अच्छा मेरे को तो हाइड्रो आर्कॉन बना देते। काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है फुरीना। The knave showed up already? Well, Lenny did say that father will be returning soon. We didn't even know that Lenny was from the House of the Hearth at the time, so we kinda overlooked that information. Please be careful, Neuvillette. The knave won't be easy to deal with. Yes, thank you for your kind advice. I'm well aware of the situation. मोना लिखा है नशेड़ी, ओ सॉरी। मोना को बना देते। I also noticed that Lady Farina acts a little odd and unnatural whenever I bring up matters related to the knave. मतलब कुछ तो चक्कर चल रहा है भाई फुरीना और नेव के बीच में, जो नहीं पता हम लोगों को। Could the knave be threatening Lady Farina or something? Possible. If that were the case, then why wouldn't Lady Farina inform me? And what means could the knave possibly have to twist the arm of an Archon? So maybe that's not very likely. Even though Farina can act a little weird at times. In reality, this problem is even more thorny than it appears. According to reports from the fortress of Meripede, child recently disappeared under mysterious circumstances. Oh shit. इन्होंने अपना कैदी खो दिया. Did he escape? The details are still unclear. We cannot rule out an escape, but there have also been no reports of him outside of the fortress of Meripede. Special guards oversee the fortress, and its internal systems are extensive. Combined with the special characteristics of the surrounding terrain, an escape should not be possible. I suspect I was only willing to share this information with you because you are friends of child, and it is my duty to see justice done. So this is what you wanted to see us about before. Yes. I would like you to go to the fortress of Meripede and investigate Child's disappearance. This was my proposal during our meeting with the knave. Rather than allowing her to intervene, I offered to send someone to find out about Child's situation and report back to her in detail. Okay. By the way, Furina कौन सा weapon use करती होगी? Sword user है वो. The knave did not seem satisfied by my proposal, but she still agreed to go along with it for the time being. Her words were, "We will talk more once we have that report." Nice. बाकी अगर तुम्हें देखनी बनती कि उसका वेपन कैसा दिखता है तो डिस्कॉर्ड सर्वर में डाला हुआ है हम लोगों ने. That means we bought ourselves some time. But why do you want us to go? Wouldn't it be more convenient to have an official? Firstly, you're already acquainted with Child. Your eyes may discern relevant details there that others would miss. And secondly, is the consideration of the unique nature of the fortress of Meripede. Isn't it just Fontaine's prison? I would not define it so crudely. The fortress of Meripede is not affiliated with the court system of Fontaine on paper. It has always existed as an autonomous entity. ये क्या मजाक है? मतलब जो भी गिल्टी प्रूव होता है उसे एक अलग ही जगह भेज दो जिसके अपने अलग लॉज है. Early in Fontaine's history, criminals were punished with exile, not imprisonment. Even today, sentences against convicted criminals still include exile, just as before. The fortress of Meripede may seem like a prison, but it should in fact be regarded as a gathering place for exiles. Okay. All we do is dispatch guards to keep watch and help maintain security,
but we have no right to get involved with any other matter. Although I do have a personal relationship with the administrator there, neither myself nor the courts have the right to be directly involved with the investigation, no matter how serious the grounds. Oh, Paimon gets it now. That's why you need us to conduct our own investigation as a third party, right? कल से मिलेंगे ना एक फ्री पुल्स. Yes. Correct. I will arrange false charges against you so that you may secretly investigate inside the fort. So, are you two willing to accept my proposal? Since you're in such a tough spot, well, child is our friend after all. मैं first लूँगा. Yeah, no matter how you look at it, it seems we're the best choice. Alright, we hereby accept this difficult task. Reluctantly. ओके चलता हूँ, कुछ काम आ गया, रात की स्ट्रीम में आऊँगा. ओके ब्रो, मिलते हैं रात को. थैंक्स फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम भाई. Sincere thanks. This matter is of critical importance to Fontaine's current situation. Also, I hope that both of you can keep this operation a secret. ओके We will rendezvous at the Fortress of Merope's entrance on Erenius once you've prepared yourselves. I will arrange for someone to take you inside. चलो जेल में. लास्ट टाइम भी येलान पुल करी थी, वो भी 82 पेटी पे आई थी, और अब नेक्स्ट 5 स्टार तो 83 नहीं तो उससे आगे ही आएगा. यार सरपेंट अगर 90 तक नहीं आया ना, 89 तक नहीं आया समा, वैसे आज तक मैंने किसी का देखा नहीं है कि 89 तक ना निकले, बट अगर नहीं आया तो 90 पे तेरा गारंटीड हो जाएगा. Prepared ourselves? Is there something we need to prepare? क्या प्रिपेयर करना है? You could enjoy a good meal and have a nice bath. I'm afraid that living conditions inside the fortress are nothing like those on the outside world. वो नहीं चाहिए. नहीं, मैं कह रहा हूँ फिर तू काफी अच्छे से प्लान कर सकता है कि अगला पुल सिंगल पुल में तेरा कंफर्म है, तो या तो तू निकाल सकता है सीधा फुरीना को. Alright! Even though we'll be there on trumped up charges, we'll be in prison for real. On second thought, is it too late to back out? You didn't even consider the fact we'd be prisoners. We've already agreed, Paimon, just accept it. Please do not worry. Since you are अब हम जेल के कैदी बन चुके हैं, पाइमॉन. ये भी नाइस आइडिया है, पर बहुत मुश्किल है. मुझे लग रहा है तेरा आ जाना चाहिए नेक्स्ट पुल में. काफी आगे तक बढ़ गया तू. You will be compensated according to the highest standards permitted to legal staff, regardless of the outcome. Now that's more like it. Come on, traveler, let's go eat the best meal we can find. We'll eat so much that we won't need to eat another meal for a whole month. Your treat. Are you leaving now? In that case, please take this cake as a token of my personal gratitude. मतलब उस टी पार्टी में किसी ने केक खाया ही नहीं, अब बचा हुआ वेस्ट ना हो जाए तो हमें दे रहे. I'll take my leave. ऐसे कौन एग्जिट लेता है भाई? मजा तो आया यार, पर मजा आया. एक बार और करें? मैं जा रहा हूं यहां से. भाई रॉकेट बना दिया मैंने इसको. वो केक पर ध्यान रखना, वो मेजर रोल है उसका. दोबारा करते हैं भाई. ऐसे चलने में अलग ही मजा है यार. मैं पीछे की तरफ क्यों फेस कर रहा हूं, उसकी जरूरत नहीं है मुझे. भाई ये विंड ग्लाइडर ऐसे जैसे न्यूविलेट के लिए बना हो. ये कितना सही है दिखने में. I'll have that and that. Oh, and one of those too. Ooh, and no Fanta, thank you. You sure ordered a lot. Didn't you just finish eating the cake that Neuvillette gave us? That cake was pretty good. खत्म हो गया केक भाई. As Paimon remembered that we're about to go to prison, Paimon's stomach suddenly became completely empty. हमें कहाँ जा रहा है तेरा सारा खाना? Now that Paimon thinks about it, we've always been super careful ever since we arrived
Fontaine, just to avoid breaking any strange laws here. But here we are, about to willingly send ourselves off to the fortress of Mirapede. Maybe this is what they call fate. Let's just try our best to investigate everything quickly once we get there. अरे शार्लेट आ गई क्या? Oh, what is that I hear? Is it the taste of a breaking story? Hey, you can't hear a taste. And what are you doing here, Charlotte? न्यूवी कैसे? अरे बुरा बनी, वेलकम टू द स्ट्रीम। न्यूविलेट बहुत ही फन टू प्ले कैरेक्टर और बहुत ज्यादा डैमेज देता है यार, वो काफी अच्छा कैरेक्टर है। वो आया तो हाइपर कैरी टीम से भी बेटर है। अरे फ्रॉस्टी वेलकम टू द स्ट्रीम भाई। और बता, पुल किया किसी को अभी तक तूने? सैड लाइफ शार्लेट। Calm down, calm down. This is nothing new. As a journalist, you should be used to this by now. As long as you can score some juicy tidbits from the traveler, you might still be able to recover the cost of the meal. आर्ले सीने को छोड़ो, ये विलन ज्यादा लग रही है। You know we can still hear you, Charlotte. भाई गेम अपडेट करने दे, कर लो कर लो। Never mind, it's nothing. I just heard you mention the fortress of Mirapede. You didn't commit a crime, did you? Please tell me all about it. नहीं बताएंगे। No way! We would never! We're just going there to... आच्छू। नहीं गया पुल, सोच रहा हूँ करूँ कि नहीं। बुरा बनी, बहुत ही फन कैरेक्टर है ये, बहुत ज्यादा डैमेज देता है। बाकी हाइड्रो आर्कॉन की किट भी बहुत तगड़ी है, तो देख लो तुम्हें 40 दिन और वेट करना है या फिर तुम्हें एक नया कैरेक्टर के साथ अपने 40 दिन निकालने हैं। Oh no, Paimon almost forgot that Neuvillette told us to keep it a secret. Well, no surprises here. पाइमॉन हकती हर जगह, हग्गू है पाइमॉन। शार्लॉट द रियल विलन, यस। शार्लॉट आएगी वीकली बॉस बन के, कैमरा फेंक के मारेगी। भाई पता है मैं बहुत लकी, मतलब जब मैंने 60 पुल सेव किए थे ना, बस 10 कितने एक्स्ट्रा लगे मुझे, 15-16 पुल्स एक्स्ट्रा लगे। 76 पुल्स किए और मुझे न्यूविलेट मिल गया। टू बी मोर स्पेसिफिक 75 पुल्स किए, न्यूविलेट मिल गया। और अभी मैंने इस पैच के प्रीमोजेम्स यूज नहीं किए हैं, तो मतलब समझ रहे हो तुम लोग, मैं दोबारा से 100 प्रीमोजेम्स के ऊपर सेव कर सकता हूँ, 100 विशेस के ऊपर सेव कर सकता हूँ। We are going to serve our sentences and redeem ourselves for spoiling the ending of a detective novel in public. देख लो भाई, स्पॉयलर्स देने वालों के साथ यही होता है। Huh? You're being arrested for that? शार्लॉट का किट भी अच्छा है वैसे, किंडा नाहिदा जैसे। मैंने इसका किट अभी तक नहीं देखा है, मैं तो इसे निकालने भी नहीं वाला यार। मुझे इसका डिजाइन कुछ ना यूनिक नहीं लग रहा है यानफे को उठा के रख दिया है। हाइड्रो आर्कॉन तक कितना प्रीमोज होंगे कैलकुलेट करो। स्पेशल प्रोग्राम आने दो 4.2 का, उसके लिए भी निकालेंगे। Oh, but now that I think about it, I suppose that's not completely unreasonable. That's pretty despicable, almost as offensive as committing theft. पर इतने प्रीमोजेम्स नहीं होंगे जितने इस पैच में हैं। Paimon really did something that serious? 4 लोटे। अरे बचपन में एक शो आता था हीरो करके हंगामा में, उसमें थी एक शार्लेट, उसका टीचर बोलता था उसके 4 लोटे। Sorry, Paimon really messed up. शाबाश पाइमॉन। यानफे प्लस पॉम पॉम, एग्जैक्टली भाई। 100 प्रीमोस के ऊपर सेव, क्या बात है, यस। आई विल बाय वेलकिन, सच्ची में क्या बात है। नेस को फाइनली बिकमिंग, क्या कहते हैं उसे, डॉल्फिन। हाइड्रो आर्गन तक कितना सेव हो जाएगा गेस करो। या देखो, अगर तुम्हारे पास वेलकिन है तुम 130 पुल्स के आसपास तक जमा कर सकते हो, और अगर तुम हाइड्रो आर्कॉन तक बात करो, लाइक उसके एंड फेस तक, हाइड्रो आर्कॉन के फेस के एंड तक, तो आई एम अज्यूमिंग कि 200 पुल्स तक तो शायद हो जाए, मे बी, पर नहीं होगा, 200 नहीं होगा। आई गेस 170-180 पुल्स हो जाएंगे हाइड्रो आर्कॉन तक। All you have to do is think of a way to get some time face to face with the warden. जस्ट रफ आइडिया लगा रहा हूं मैं,
कोई सोर्स नहीं है मेरे पास, एक ही सोर्स है मेरे पास, ट्रस्ट मी ब्रो। Sounds really cool, huh? Only those who have made significant contributions to the nation have been conferred this title. It's incredibly rare. यार इनकी कॉन्वर्सेशन किसे सुननी है? If I could, you make, of course. इनके डायलॉग में स्किप करूंगा, मुझे ना पाइमॉन की आवाज पसंद है ना शार्लेट की पसंद है। Be here any second, right? ये भाई ऐसे बाल कौन रखता है अजीब से? Wait, just how much did you order? डैम, काफी मोटा पैसा मिला है पाइमॉन को। न्यूविलेट का टीम बताओ तो सबसे अच्छी टीम न्यूविलेट की है, एक तो न्यूविलेट, फिशल, काजुहा, जोंगली, बेस्ट टीम। नेज ब्रो एक मुझे भी दे देना वेलकिन, निकल। Well, guess we have nothing to regret now, so let's get going. और बता शार्लेट। I had no idea you could eat so much. That didn't go according to plan. Please, please don't forget about the material for my news article. ओके, पेमेंट लाओ, पेटीएम करो, कंटेंट लो। मेरे चिप्स के बजट से लूंगी। माय चिप्स, भाई तू चिप्स सैक्रिफाइस करके वो ले रही है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि चिप्स ले ले, ज्यादा बेटर वही है। नेज़को चिप्स यहाँ भी भेजना नहीं है। उसी के पैसे से तो वो वेलकिन ले रही है भाई। पाइमॉन ब्लैक होल है, ब्लैक होल। बाकी सब उड़ गए। क्या मस्त चलता है भाई ये। मजा आ रहा है यार ऐसे चलने में। चिप्स बेटर, ट्रस्ट मी। कैरेक्टर भी चाहिए। शी इज बियॉन्ड सेविंग गाइस, वो वेलकिन लेके ही मानेगी। अब इसमें यूज किया यार, अभी फ्रॉस्टी मैंने बिल्ड नहीं किया इसको, अभी बस पुल ही किया इसको मैंने। मैं इसको बिल्ड करना शुरू करूंगा रात की स्ट्रीम से। अभी तो मैं खाली आर्कॉन क्वेस्ट कर रहा हूं। सुबह की स्ट्रीम की इसको पुल करने के लिए। ओए क्या मैं यहां से उड़ते हुए जा सकता हूं? नहीं, एक बार और ट्राई करो। नहीं कर सकता। अरे न्यूविलेट भाव, ऐसा लग रहा है नशे करके चल रहा है न्यूविलेट वैसे। कुछ भी। This where the entrance is? न्यूविलेट, रायदस्ली, पुरीना, तीनों कैरेक्टर चाहिए। लूज करी 50-50 तो फिर से पुल करो। You have come just as promised. Yes, this is the one and only entrance to the fortress of Meripede from Eraneus. ये एंट्रेंस है? Careful. You may want to step back a bit. ये लिफ्ट है क्या? Ooh. So Oh. you have to go down from here? Is the prison underwater? Utilizing both the barrier of the water as well as the fear humans have of the depths, the fortress of Meripede is naturally the perfect place to confine and guard criminals. Got it. But do not worry. It is not nearly as रियोदस्ली, रायोदस्ली। for yourselves. वैसे रियोस्ली है प्रोनाउंसिएशन उसकी, रायोस्ली। Paimon hopes you're right. Oh, and there's one more thing. I mentioned that I have had personal dealings with the administrator of the fortress, Writhsley. He's a very shrewd fellow. रायोस्ली, Yeah, we heard about him too. रियो। Duke, right? Correct. He is the highest ranking manager of the underwater prison. अच्छा अच्छा। Even though you are going there to investigate at my behest, it would behoove you to avoid any confrontation with him or any of his subordinates. The Duke rarely ever leaves the fortress of Meripede, but that does not mean he is not privy to all that is happening inside and outside the fortress. He is quiet, but not unaware, so please bear that in mind. The Duke, Riosley. All right, it's about all the time that we have to talk privately. I'm counting on you two.
डब्ल्यू क्यों लिखा है पता नहीं, अजीब चोचले ये इंग्लिश और फ्रेंच वालों के, लिख देते हैं फिर बोलते हैं साइलेंट। अबे तो लिखा क्यों? रियो दे जेनेरियो कुछ भी। मेरा वाईफाई जिंदा है कॉन्गो टोमी, कल इतनी खतरनाक लाइटनिंग हुई मुझे लगा मर गया वो। लाइटनिंग मतलब क्या? तेरे राउटर पे बिजली गिरी बाहर से या तेरे राउटर में इलेक्ट्रिक शॉक्स है बड़े बड़े? Hey Samantha, anime artist, hello, new subscriber, welcome to the stream. And thanks for subscribing, welcome to the gang. Good. Madeline. I'm here, Monsieur Neuvillette. These two are the newest convicts, I presume? Don't worry. Once again, thanks for subscribing, Samantha. This music is for you. ऐसे करते हम सबका स्वागत. Like we would try. Please follow me, you two. I'll process your paperwork for entering the fortress of Meripede. अब पेपर वर्क भी कराओगे? इतनी थंडरिंग हो रही थी ना, धम धम करके आवाज आई, मेरे को लगा ट्रांसफॉर्मर उड़ गया। थंडरस्टॉर्म हो रहा था, राउटर की इंटरनेट केबल बाहर का करंट ले लेती है तो उसे आई सी। मी न्यू इन गेंशन इम्पैक्ट। नाइस, you'll enjoy this game. ये क्या है? To the stars shining in depths, note involvement in other quest. क्या है ये? Continuing the current quest may cause parts of the following quests to become occupied. Unfinished comedy world quest. Continue this quest. You can choose to continue this quest from quest menu. क्या करूँ यार मैं? किसी ने इनकाउंटर किया ये? AR-45 ओके। IC नेज भी मतलब पुणे में ही रहती है, कॉज उसकी भी लाइट गई थी ना। तेरे घर में लाइट है? बदला सामने रहती है ये मेरे, रुको उसको कंटिन्यू करो। यार मैं क्रो क्यों बोल रहा हूँ यार, ये सरपेंट ने मेरी आदत बिगाड़ दिया। राइट द लिफ्ट एंड एंटर द फोर्ट्रेस। मुझे लगा मैं सारे कर चुका हूं यार। लिफ्ट कहाँ है यार? मैं सीधा यहां से नीचे नहीं कूद सकता? ओ है ही नहीं नीचे जाने की जगह। Are we already underwater now? Huh. So this is what it feels like to be a criminal in Fontaine. You two seem to be taking this pretty well. It's rare to see convicts in such a good mood. भाई क्या लग रही है ये जगह? बिहार इज अ प्लेस जिधर हर एक चीज जो नहीं सोचते लोग वो सब होती है, दैट्स वाई बिहार। ओके मैं लिटरली लेविटेट कर सकता हूँ जितना मेरा मन करे। It's you, Madeline. Why'd they make... Monsieur Neuvillette personally requested I escort these two convicts. I suppose he was concerned others might not be up to the task. Well now, aren't you the lucky one? Must be nice to be on good terms with the big shots like the Chief Justice. The only people I get to see every day are the new imps. कुछ जल रहा है भाई, कुछ जल रहा है भाई। Well, have you tried service with a smile? Who knows? It might help your professional reputation. तुझे पता है किस केस में अंदर आया स्पॉइलर देने के? Yeah, right. As if. Every criminal comes through here looking miserable. How can I smile with such a toxic work environment? And even if I did smile at them, the convicts would probably just think that I'm some freak getting some kind of twisted enjoyment from their pain. अभी पता चलेगा, ओके? Point. Well,
I've finished transferring you. You two will register here, and Moret will guide you through the remaining procedures. Okay. Yep, I'll take it from here. You head on back to that bright and sunny world above. कितना जलती है भाई ये. लॉल फ्रॉस्टी डर के भाग गया. Okay, let me see. भाई क्या मॉड है भाई, डरा डरा के भगा रही है सबको. Correct. That would be us. Let me confirm your charges and sentence. Let's see. You two are charged with eating a cake specially prepared for the Archon by a Snezhnayan envoy without the Archon's permission, thereby incapacitating the political center of Fontaine for a brief period. Sentence: 45 days. भाई न्यूविलेट तो चिरान देगा नंबर का. उसी ने केक दिया था यार हमें कि केक खा लो यार, तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, केस में फंसा दिया उसी के. ये सही है भाई, गलत बात है न्यूविलेट भाई. केक खाने के जुर्म में फंसा दिया. पाइमॉन जिंदगी में कभी केक नहीं खाएगी. Wait, you mean the cake that Neuvillette gave us was... धोखा हुआ है पाइमॉन के साथ, धोखा हुआ है पाइमॉन के साथ. न्यूविलेट में वेपन कौन सा दिया? देखो बेस्ट 4-स्टार वेपन उसका वो है, प्रोटोटाइप एम्बर. अगर तुम वेपन के लिए जा रहे हो काफी अच्छा वेपन है वो. केक खाने के जुर्म में अंदर कर दिया भाई. Just looking at the charges, it seems you two are capable of causing some serious trouble. भाई केक खाने में क्या ट्रबल है भाई? जब मैं सुना था मैं बोला क्या बुद्धू केस बनाए हैं. देख मैंने कहा था 3 बज गए नहीं आए. ओके. And considering how fond Lady Furina is of sweets, this crime is tantamount to trying to assassinate the Hydro Archon herself. What the hell? केक खाना assassination के बराबर कब से हो गया भाई? You flatter us. Now I've seen everything. Anyway, we still need to finish processing you before you can enter the fortress of Meripede. केक खाने के जुर्म में Please अंदर. stand in front of the board over there. I'll take your mug shots with my camera. Oh, all right. But be sure to catch Paimon's good side. हद है भाई, जेल में भी एंगल देख रही है. भाई मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ रही है इस सीन पे. वो देखो पोज मार रही है भाई. यू कंप्लीट ऑल द प्रोसीजर्स. ओके चलो चलो जेल में चलते. अब रायोस्ली से मिलते हैं. And we're done. Thank you for your cooperation. Next, someone will be along to guide you inside the fortress. Please be sure to cherish this opportunity for rebirth. लॉल. करो करो मतलब करो करो. वो बोर्ड भी नहीं पकड़ाया. Rebirth? तुझे प्रॉपर जेल चाहिए A little much. और काले सफेद कपड़े. 45 days. You two are the new inmates, right? Follow me. Oh, okay. Paimon is Paimon, and this is the trap. Save it. Not like I'll remember your names. Move it. बेइज्जती कर दी इसने तो. मैं तो एक वर्ल्ड क्वेस्ट किया. हाइड्रोकिलस का प्री रिक्वायरमेंट चल रहा मेरा. हाइड्रोकिलस का प्री रिक्वायरमेंट. ओके अच्छा हाइड्रोकिलस तो फार्म कर रहे हैं ना, उसके लिए वर्ल्ड क्वेस्ट से लॉक होगा वो. गॉट इट. भाई तुम बोले थे लॉस होगा, विन कैसे हो गया? तुम जीत गए 50-50. कंग्रेचुलेशंस भाई. इस चैनल के सब्सक्राइबर्स पे लकी लक बरस रहा है. हाँ फिर पेपर चाहिए, So, प्रॉपर चाहिए. you one of the guards here? Is there anything we should be careful of while we're here? मेरा कब लक आएगा? एक दिन. Did Paimon already ask something she wasn't supposed to? हाइड्रो. Why should I tell you anything? What's in it for me? You sure don't seem like a guard. Why were you sent to bring us in?
This is exactly why I can't stand you fish. I wouldn't even be doing this if it weren't for the credit coupons. वो क्या होते हैं? Coupons? Alright, seeing as you're not the annoying kind that's getting dragged in here crying and blubbering, I guess I can tell you a few things. But next time, it'll cost you some coupons. Mora means nothing here. Here, we use credit coupons. Okay, समझ गया. Coupons can get you almost anything in the Fortress of Meripede. Desires? Fulfilled. You want power? No problem. Coupons can even change fate itself. ये भी सही है यार. आपका स्पीड पे एक्ट 3 5 तक खत्म होगा. मेरे पास टाइम है यार 5 तक. मैं तो आपका बात कर रहा था. आपने बोला था न्यूविलेट हार्ड पिटी में जाकर लॉस होगा, आपका सॉफ्ट पिटी में विन हो गया. जी जी भैया, थैंक्स यार. मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि मतलब कैसे निकल गया यार. एक्ट 4 कब? कल करेंगे शायद. Credit coupons are a currency that can only be used here? It's not as simple as that. Like Moret said, everyone gets a chance at rebirth. No matter how much money or power you had before, it means nothing once you set foot inside the Fortress of Meripede. You have to start over and earn your coupons. मिला भाई. रेड तेरे जाते ही मिल गया मेरे को. Everyone starts from the same place. तेरे जाते ही मिल गया मेरे को. Chance at a new, less terrible life. I guess that's the real purpose of the coupons. They symbolize true fairness and true justice. पिटी पिन चार्ट में देख ले. 76 This is also exactly why so many criminals choose 60 विशेष थे, बस थोड़े बहुत और ग्राइंड करने पड़े. after they've served their sentence. बाकी 10 वहीं से मिल गए थे So that's what the Fortress of और Meripede. थोड़ा एक्सप्लोरेशन से हो गया. Huh. Paimon was under the impression that it. It certainly ain't all sunshine and roses here, but it's also not the worst place to be. You'd better take a good look at the scenery now. It'll be the last chance you get for a while. Me who got at 10. भाई 10 पे तेरे को ही मिला है, मेरे को भी मिला है. क्या डिफरेंस आ गया उसमें? After being away from the sunlight for so long, इसको 75-ish पिटी में सॉफ्ट पिटी बोलते हैं. it just stopped. क्या I'm actually an inmate like you two. सॉफ्ट पिटी कहाँ? 76 लग गए. Soft pretty यार वो. Extra coupons. Have you ever seen the Duke? Have you seen a harbinger from Sneshnaya? भाग गया. Why aren't you answering us again? I've told you enough for free. Any more info is gonna cost you. So all you care about is Mora. Wait, no. Coupons? Almost there. It's मुझे not क्यों इतना competing. लेट मिल रहा? Your turn to give it a try. लक अपना अपना भाई. मेन चीज है मिलना चाहिए. लेट्स गो. चलो रेलगाड़ी बनो और चलो. राइट द लेफ्ट. कहाँ है लेफ्ट? ये रोबोट्स उठो. इसका वेपन तो कर ही नहीं सकते. मतलब for F2P it's hard pity bro. So, we're going even deeper now? Just how deep down are we? It's like a metaphor for your previous life, isn't it? आज दिन नहीं है. अच्छा वेपन के लिए वो तो आराम से कर ले यार फार्म. वेपन तो जल्दी हो जाता है. न्यूविलेट अबे शोकेस कब तक करोगे ब्रो? अभी मेरे पहले बिल्ड हो जाए. अभी मेरे पे आर्टिफैक्ट नहीं है. वेपन भी मेरा 70 पे इसका 4 स्टार वाला. मुझे भी टाइम लगेगा इसको बिल्ड करने में. अभी लेवल अप करूंगा फिर आर्टिफैक्ट के लिए हल्की सी फार्मिंग करेंगे. हल्की सी. टैलेंट्स कुछ नहीं किया मैंने अभी. टैलेंट मटेरियल पड़ा है मेरे पे. टैलेंट मटेरियल फार्म कर रखा है. मुझे लेवल अप के मटेरियल्स चाहिए. Entrance to the Fortress of Meripede? वो स्टारफिश और नए वाले बॉस के. Huh. It looks like there are
sure don't look happy. Maybe we look too relaxed for fresh convicts. Hurry up and think about something sad. Oh, right. We're on someone else's territory now. We need to think of a good way to act like criminals to get by. If we're discovered, even Neuvillette might not be able to rescue us. If we ever get found out, then maybe we'd become criminals for real. Hey! Don't scare Paimon! Oh, Paimon's not ready for all this. ट्रैवलर की सेस मतलब वो भी यहीं पे है। I don't really know you. भाई स्पॉइलर हुआ तो यार मैं टाइम आउट दे देने। बेस्ट रीजन टू बी सैड अबाउट। Have happened to anger someone important, did you? इसकी शक्ल देख के लग रहा है इसके अंदर थोड़ा सा भी गम है कि 3 साल हो गए नहीं मिल रही है वो। ये तो मस्त इवेंट कर रहा है, घूम रहा है इधर उधर, हैंगआउट्स में फ्लर्टिंग चल रही है फुल ऑन। Someone important? Paimon doesn't think so. Now's not the time to worry about that. Anyway, it's over there, so you just go on over there by yourselves. I've done my job, so... What was that all about? Wait a second. Are there usually so many Gardermechs around here? Does then mean that They're already onto us? get ready to fight. अरे आ गया रायसली। 7459 and 7560. Welcome. Oh, no need to be anxious. These Gardermechs aren't here to attack you. In fact, they're here as your honor guard. When I heard that you were friends of Monsieur Neuvillette, I had the Gardermechs come and wait in formation. Okay. अरे सेंको भाई, who's the real Archon? Bennett. Wait, you know about our connection with Neuvillette? The seafloor isn't as cut off from the world as you might imagine. However, I'm afraid that I know nothing more than that you are friends of the Udex. Iodex रख देते भाई उसका नाम। And as you can see, committing a crime means being sentenced here, even if you're friends with the Chief Justice. Quite fair. So you must be. The Duke! Greetings, Your Grace. Lovely weather today, isn't it? Oh, greetings, my good fellow. Well, I'm willing to imagine that the weather is as good outside the sea as you say it is. How great it would have been if only the fortress of Meripede had been built on the coast, huh? It would have been so convenient to enjoy a nice chat in the sunshine. Chi real Archon. I mean Hydro one, maybe Neuvillette. You'll also believe soon, okay? My profuse apologies. I just got so nervous when I saw you, So this is the Duke. He sure looks a lot younger than Paimon imagined. The Traveler and Paimon, correct? Mr. Deacon here was responsible for your welcome. I trust you were satisfied with his guidance? It was okay, his attitude could use some work though. He's taken great care of us. Splendid chap, really. हम सच बोलेंगे. Ah, I see. In that case, I regret to announce that Deacon here has just missed the best opportunity in his prison career to be promoted. Sad life. I admit that I was only thinking about the coupons. I'm sorry to have disappointed you, Your Grace. I once hoped for a chance to do some higher level work. And Chi is the head of Archon, lol. I had no idea you two were big shots who were worthy of speaking with His Grace. Losing out on such a big opportunity because I couldn't see past my own nose. ऑफेंड मत होना, बस एक बात बोलो यार, बस कोई स्पॉइलर मत देना यार प्लीज. Time ahead, Deacon. There'll be more opportunities. Well, I believe that concludes the introductions. We've already taken enough time here. Deacon, if you would. Yes, Your Grace. I'll take my leave now. Please follow me. To make you feel more डिजाइन काफी सही है भाई रायसले का. facilities of the fortress of Meripede. मतलब देख रहे हो उसकी टाई पे कितना काम किया है यार. He's going to personally give us a cure? Huh. Paimon can't figure out what this guy's thinking at all. Let's just roll with it for now, but I hope he doesn't know too much already. No wonder Charlotte. चलो बाय मैं जाता. Okay, Serpent Bro. Thanks for joining the stream. All right,
Let's keep up with him. तेरी वॉइस हाइड्रो इससे जैसी क्यों? हाइड्रो इससे क्या यार? टॉक टू रायसली एट द कूपन कैफेटेरिया. ह्यूडो इसे वो कौन है यार? There's no need to be so reserved. The label of criminal is nothing but one of many identities. नॉट हाइड्रो सर, ह्यूडो मुझे नहीं पता कौन है ये. Well, then, पर जैसी वॉइस है भाई, उसमें क्या कर सकते हैं? Now, we've arrived at a very important place. Welfare mule? That's right. Criminals are essential to fortress operations. But that's not how it was. Back in the day, it'd cost you reward coupons just to get a cup of water here. Okay. Fish like you who just arrived with nothing. It was only after His Grace became the administrator. Now everyone gets a square meal every day. Even no good slackers who... In the fortress of Maripede, credit coupons are the BXD नहीं देखी क्या? Everything must be purchased. नहीं यार, कोई आने में ये Trade if nobody could even... हाई स्कूल. अरे नाम सुना यार, कभी देखा नहीं है मैंने. Your Grace is ऊपर ऊपर से स्टोरी पता है, पर मैंने पर्सनली उसको देखा नहीं है कभी. Oh, wait, no. We should have dropped our guard. Let's continue this way. टॉक टू द रायसली एट द पैंक्रे, क्या लिखा है ये? पैनक्रेशन रिंग. ओके. अरे एक वे पॉइंट है यहाँ पे. भाई पहले वाले अंडरग्राउंड से कितनी अलग है ये जगह. अच्छा ऊपर होगा वो. मैं देख रहा लेकिन चैट नहीं कर पाऊंगा. क्वेस्ट करा. ओके ब्रो. हे हे, अरे दावल भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम. व्हाट्स अप? Sometimes we have so instead of leaving them to their own device. Pancration matches? And you देख ले, तेरी वॉइस एमसी को दे यार, उससे अच्छे आने में देखने के लिए. No, actually. Of course, the Oh. Sure. स्टोरी सुनी मैंने यार, इतना घटिया मैं क्यों देखूंगा? इतना टाइम नहीं है मेरे पे. No, no. A reasonable guess. Oh, you hear that? Paimon. That is something you can discuss between yourselves later. Let's move on for now. मैं पता नहीं क्या अजीब सी टीम लेकर चल रहा हूँ. मैं टीम पे अब ध्यान गया है मेरा. अरे जाना कहाँ से ऊपर यार? उसी लिफ्ट से जाना होगा ना जहां से वे पॉइंट के लिए भी देखा था हमने. जरा मेरे को तो बताओ उसकी स्टोरी. तुमने देखा, तुम्हें पता होगी स्टोरी यार. मैं देख रहा लेकिन अच्छा ये तो मैंने पढ़ लिया था. खुल जा दरवाजे. के 5 और प्रीमो जेम्स. कोई ट्रेजर चेस्ट वगैरह ना छूट जाए भाई इधर. Your Grace. Good morning. I mean, good afternoon. No, what time is it again? भाई सभी इसको देख के डर जाते हैं यार. What time indeed? Time waits for no one, so it's... जोंगले का डिसाइपल न्यूविलेट. हाँ, सिमिलैरिटी बहुत है दोनों में. My apologies, Your Grace. Jeez. That guy's so nervous, he almost forgot. Sorry. These are the dormitories, which is where inmates sleep. The guards will inform you where your bunk is later. In the fortress of Maripede, criminals यहाँ पे कोई usually कैसे spend सो most of सकता है their भाई? time in either the production zone or the sleeping अच्छा वो areas. रहा बेड. The production zone? What does it produce? Is that where we'll be working?
जोंगली इज द बेस्ट भाई. जोंगली तो एकदम क्लासी कैरेक्टर है. काफी डिजाइन उसका मतलब क्लासी है भाई. Not necessarily. पर नेवलेट का ही बुरा नहीं है यार. Production zone is the most reliable way to earn credit coupons. If you have other skills, you can skip your shifts to earn them in other ways. Okay. Wait, you're the manager of this place, and you're just telling us? The fact that the Fortress of Meripede has continued operating completely autonomously is proof enough that most people are willing to work honestly and earn a stable income. As for what we produce, many of the clockwork machines seen all over Fontaine originate from our workshop. Therefore, the Fortress of Meripede is not only a place where criminals... Otter Ultra Pro Max भाई ऐसे कौन बेइज्जती करते हैं? machine factory. There's no need for me to get into specifics about the production process now. You'll experience it all firsthand when you report for work tomorrow. Thank you, Your Grace. You got it, boss. Let's move on. The tour continues over this way. अरे लेनी. You really scared me there. I didn't expect to see you here, Your Grace. I thought maybe I was so tired from work that I was starting to see things. लेनी यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? The only thing you should be seeing is the work in front of you. Stay focused and keep up the pace. Okay. मैं स्टोरी स्किप की तो अब सुन रहा सब अच्छे से. अच्छा. Oh? Is something the matter? क्लासिक या डिजाइन की बात नहीं कर रहा. वो मोराक्स इतना ओपी है फिर भी पावर नहीं दिखाता. हमें तो नर्फ वर्जन ही मिलने हैं भाई खेलने के लिए. It's nothing. Paimon's just worried about how hard we'll have to work tomorrow. Go to infirmary and talk to Ryodesley. भाई ये इतने क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं. अलग अलग मार्क्स बने हुए हैं. बाद में आके इनको ड्रम बज रहे हैं यहाँ पे. डैम. ये वे पॉइंट खोलते हैं फिर चलते हैं. किधर भाई दिख नहीं रहा है ये. नीचे जाना होगा क्या? और नीचे शायद ये. मुझे लग रहा है मुझे नहीं कूदना चाहिए था नीचे. पजल है पूरी जगह. ओके. आई गेस मैं शांति से शराफत से कैफे में चले जाता हूँ इससे पहले मैं फिर खो जाऊं. अरे एक और कैरेक्टर हाइड्रोविजन है इसका. अरे तो वो टीजर वाली है वो जो उसको चाय देती है. Your Grace, what are you doing in the infirmary at a time like this? Oh no, you didn't injure yourself, did you? Not yet. यार और लोली कैरेक्टर्स नहीं चाहिए थे गेम में यार. हैं? ये क्या नाम है भाई? सिजुइन. अजवाइन रख देते भाई. क्यूट. Then you must be here for those two. यार मैं लिटरली मुझे इरिटेशन होती है नए नए लोली कैरेक्टर्स को देख के. Allow me to introduce you. This is the कि लगा दो एक उल्टे हाथ का भाई. Here is the Fortress of Meripede's head nurse. ये नर्स है.
इतनी सी उम्र में? कौन सी प्रजाति है ये? मतलब इंसानों को कितने लग जाते हैं? वो 30-40 साल के होते तब जाके डॉक्टर बनते हैं, ये ऐसे ही? Hello, new faces. They call me the head nurse, but I actually handle all the nurse-related work all by myself down here. मतलब नो डाउट ये आई गेस हीलर होने वाली है, और डिजाइन देख के तो लग रहा है 5 स्टार कैरेक्टर है। पूरा गेम पेडो बना रहे। यो मी हियर आफ्टर सीसी कंप्लीटेड क्वेस्ट। अरे सुशांत ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या क्यूट, अभी ये गेम भी पेडो बन रहा। यूनेस मिला न्यूविलेट। Since you seem to have some rare downtime with no patience, perhaps you could find the time to join us for dinner? Oh, then these two must be some important convicts. Sure, I'll join the welcome party. ये 4 स्टार हीलर होने वाली है, मैं बता रहा हूँ। Thank you. Your presence will be the pièce de résistance for today's tour. ये वाली 5 स्टार या 4 स्टार अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं बस गेस कर रहा हूँ कि 4 स्टार हीलर होगी। अरे एस्मो, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल चाल? Oh, so the chore part is over now? I believe I've already covered the primary aspects of life here in the fortress. As for your work, there'll be someone else to guide you through the details. Is there anything else? भाई यहाँ पे जो इसने वुल्फ सा लटका रखा है ना, काफी कूल लग रहा है। ये क्या चीज है ये? मैं तब से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा। बैज है शायद कोई। ओ स्टिल विशिंग, क्या बात है। यह 4 स्टार हीलर होगी मोस्टली। व्हाट आर योर सोर्सेस ब्रो? न्यूवी को डायोना चलेगा? मैं तो कहता हूँ डायोना यार फ्रीज रिएक्शन कर देगी तुम्हारा। अगर तुम नोएल को मिललित दे दो तो काफी अच्छा हो जाएगा, बाकी ट्राई करके देखना पड़ेगा। I seldom conduct tours, so why don't you just ask if you have any questions? Well, this is our first time here. Paimon's not sure what to ask. Then let's head back to the coupon. Enjoy your jail life. Maybe a meal will help you think. Okay, me for Risley, क्या बात है? मेरा सोर्सेस गट्स है। अच्छा, तुम्हारा भी ट्रस्ट मी ब्रो है। वेल, क्वेस्ट काफी इंटरेस्टिंग है। पार्ट 1 कंप्लीटेड, आई सी। अरे सेंसे, तेरे लिए नई लोली डाली इन लोगों ने गेम में। तू तो देख के बहुत खुश हुआ होगा भाई। डायोना तो रिवर्स मेल्ट करती है। लॉल, सेकेंड आईडी में 10 पुल मैं नूबी आया। मैं न्यूविलेट आ गया। अरे क्या बात है यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। गो टू द कूपन कैफेटेरिया एंड टू गेट सम फूड। पर मेरे पास कूपन नहीं। अबे नीचे उतर, नीचे उतर। कहां से जाऊं मैं कैफे में? कोई वे पॉइंट खोला है मैंने कैफे के पास का? आई गेस मैं पैदल ही चला जाऊंगा। भाई ये मैप देख लो तुम, कितने लेयर्स हैं भाई। डैम। यस, मैं काफी हैप्पी था। लगा ही था। ओके, मी गोइंग, नो स्पॉयलर्स लाइक लास्ट टाइम। यस, नो स्पॉयलर्स। मैं न्यू का ड्रेस कहाँ मिलेगा? ये न्यू का ड्रेस कहाँ मिलेगा पता नहीं यार। गाइज मैं अभी कोऑप नहीं लूंगा क्योंकि मैं आर्कॉन क्वेस्ट कर रहा हूँ। कोऑप वगैरह मैं रात को करूंगा जब न्यूविलेट को थोड़ा सा बिल्ड करेंगे हम लोग। तब तक तेरे मैसेज सेंसे ने डिलीट कर दिए। कौन से मैसेज बताओ यार, मेरे को दिख रहा। The main thing is that it's free. Mine pretty good too. लोग कौन बोल रहा है? जो नाहिदा। भाई तेरे को नाहिदा दिख कहाँ रही है? तू पहले मेरे को ये बता। हर बार बोलते नाहिदा में, भाई नाहिदा है भी नहीं टीम में यार, कुछ भी। कौन है नाहिदा मीन? अरे वो नशे में है भाई।
Sounds like he hasn't changed a bit. सिल्वर इज लोली सिम्प. हाँ मैंने लिखा था सिग्नेचर में लोली इम्पैक्ट. With him, I can invite you to accompany. मैंने तो लिखा था सिग्नेचर में लोली इम्पैक्ट. Independent from Fontaine's court system? What do you? Well, we provide all kinds of mechanical products for official सेंसे का use. लोली इम्पैक्ट. Some essential goods have to be obtained from the वेल वो मेरी आईडी नहीं थी. अब तो यही बोलेगा. तभी जाके वाइफो इम्पैक्ट कर दिया तूने उसको. Monsieur Neuvillette's character is unimpeachable. No matter the question, you can discuss it openly and freely with him. Talking with him feels quite effortless. In Okay. light of that, I am quite willing to go out of my way to show respect and accommodate him. In fact, right now, I'm treating you two as guests invited by Monsieur Neuvillette. दोस्त की थी if you don't know. तभी सबूत मिटाए जा रहे. After this, you two will just be inmates here. Understood. Thank you for your hospitality. You're very welcome. Well, your new life awaits. एंड मेरी आईडी में वाइफू से ना की लोली. अबे चल खुद तेरे पास नाहिदा पड़ी है. खाना तो दो भाई. भाई इधर का म्यूजिक इतना एपिक क्यों बना रखा है इन्होंने. किसी एंगल से जेल की फील नहीं आ रही यहाँ पे. अबे यार ऊपर कैसे जाऊं मैं. फिर खो गया मैं. अरे बैग में क्या मिला यार. अरे एक स्टैंडर्ड विश कहां से आई मेरे पास. कुछ नहीं मिलता भाई स्टैंडर्ड बैनर से. Water comes in many flavors to the discerning. लिखा तो तूने ही था एक्सक्यूजेस. नाहिदा कौन. अच्छा अच्छा While water from Liyue has खुद been पे आई. curing after अबे use. धीरे. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. मैंने पूछा पानी के बारे में कुछ. भाई इतनी बड़ी वॉइस लाइन है इसकी. इतनी बड़ी वॉइस लाइन. मेरे को मेरी फर्स्ट डायोना मिली इस बैनर से. क्या बात है. वेपन नहीं लेगा न्यूविलेट का. अरे ईशान भाई वेलकम टू द स्ट्रीम. यार इट्स नॉट लाइक कि मेरे पास चॉइस है कि मैं वेपन लूंगा कि नहीं लूंगा. मैं तुम्हें पिटी दिखाता हूं मेरी. देखो पहले तो प्रीमो जेम्स नहीं है. सब जा चुके हैं. न्यूविलेट ले गया सारे. देख लो मेरी पिटी. तो मैं क्या करने वाला हूँ. प्रीमो जेम मैं सेव करने वाला हूँ ये पूरे 20 दिन तक. लास्ट डे पे मैं ट्राई करूंगा वेपन के लिए. दोनों में से कोई भी वेपन आ गया मेरे लिए दोनों विन विन सिचुएशन है. मैं कहां से जाऊं मैं ऊपर. ओह यस. हाय. अरे लॉस्टी वेलकम टू द स्ट्रीम. और बता किसी पे पुल किया कि नहीं गया अभी तक. Oh, you got Neuvillette. Yes. I'm trying for Hutao. All the best, bhai. ट्राई करूंगा वेपन बैनर के लिए लास्ट डे पे. नहीं मिला तो फिर इसके रीरन पे ट्राई मारेंगे वेपन पे. क्योंकि ये वेपन बैनर बहुत अच्छा है. नए वेपन्स भी हैं इसमें. लाइट कब आएगी. परसों. मजाक कर रहा हूँ. अभी आएगी 10 मिनट में. अबे यार एनपीसी और इसकी कॉन्वर्सेशन कौन सुन रहा है. आई एक्सीडेंटली पुल चाइल्ड. सो क्यों निकाला यार. चाइल्ड से तो बहुत बेटर है भाई. ये मेरो पाइड पूरी भूल भूलैया है. मैं अनॉय हो गया कसम से. So this is where we'll be sleeping from now on. Oh, Paimon can't believe this. The days of staying home and reading detective stories are like a dream now. अभी एक दिन भी नहीं हुआ पाइमॉन. By the way, traveler, we saw a lot of things worth investigating just now. Even though the Duke didn't say it. 10 मिनट में नहीं आई तो वेलकिन गिफ्ट कर. बिल्कुल नहीं. We are criminals, and Paimon did eat that
but we're actually here to help Neuvillette. मेरी वेपन पर 58 की पिटी है. मैं तो देख रहा हूँ, मैं बिल्ड करूंगा. पिटी पिटी बिल्ड हो गई तो अच्छा है, फिर हाइड्रो आर्कॉन के लिए इजी हो जाएगा थोड़ा. He knows we're here on a mission, or is Paimon overthinking things? Yeah, Paimon thinks. मेरी ये तो मैंने पढ़ लिया था. सायू क्या? Maybe something like, I was trying to get Sayu for fast travel. don't try anything funny. Gotcha. But there's nothing we can do about that. We already here after all. Yeah, you're right. It's not like we can go back to Neuvillette empty-handed and say, the duel looks scary, so we gave up. And besides, the Duke said that he was willing to go out of his way to show respect for Neuvillette, right? So, we at least need to try. But Paimon hasn't gotten a clue where we should start our investigation. There was one other important thing. Linny's presence. हाँ, Linny क्या कर रहा है यार यहाँ पे? Yeah, that's what Paimon was thinking too. Paimon almost spilled the beans when we ran into him. मुझे क्या लग रहा है जैसे न्यूविलेट ने हम लोगों को यहाँ पे घुसाया ना, आर्लेचिनो ने कुछ करके लेनी को घुसाया है यहाँ पे. मेरा बेनी C7 हो गया. हाइड्रो आर्कॉन का वेपन स्किप है, बाइजू के साथ आ रहा. ट्राई तो करूंगा मैं यार. भाई जापानीज क्या हाइड्रो, अच्छा हाइड्रो आर्कॉन का ना भाई. जापानीज में किया कि नहीं रिजली का, जोजो का भी है. नहीं किया यार अभी तो. आर्कॉन क्वेस्ट वगैरह मैं इंग्लिश में ही रखता हूँ अपनी. अरे दार्विन भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम. I had to guess. Oh, right. Lenny and Lynette are from the House of the Hearth. They work for the Knave, so they could be here to investigate too. And looks, there's something over there. Huh? Oh, it's a card. Lenny का. I didn't notice it earlier. It looks like a magician's prop. Lenny must have left it here. It was nice to bump into you again. Let's catch up. विपुल भाई बिग फैन. क्या बात है भाई, काफी पॉपुलैरिटी है सेंसे की तो. What in the world? It's written like he's greeting a buddy on the street. Paimon thought he'd write something important. If you say so, we can ask him what's going on tomorrow. Let's get some rest now. सो जाओ. उठ जाओ. Hey, you're finally awake. Well, it's Paimon's first day as a prisoner. Hey, come on. Hey, lazy bones. What are you still doing here? If you don't want to starve, then get yourselves over to the Sorry. Go to production zone to talk to Grainville. अब ग्रेनवेल कौन है यार? मेरे को वे पॉइंट नहीं मिल रहा वो वाला. यार यहाँ का म्यूजिक कुछ ज्यादा ही एपिक नहीं है? मुझे लगा पानी के अंदर जा सकूंगा मैं. लिने विल जस्ट किडिंग. अरे यार स्पॉयलर्स मत गिराओ यार चैट में यार. मॉड्स अगर तुम्हें कोई स्पॉइलर दिख रहा है तो यार प्लीज तुम खुद से डिलीट कर दिया करो. स्पॉयलर्स देखने के बाद यार मजा नहीं आता फिर करने में क्वेस्ट.
आई हैवंट इवन स्टार्टेड मैन। फिर सही है। गो टू प्रोडक्शन। नहीं है स्पॉइलर, फिर तो ठीक है यार। Don't interrupt me when I'm speaking. भाई बड़े सालों बाद मेरा मन किया मैं मुक्का मारूं किसी को। Listen carefully to my instructions. I don't want any mishaps. Every machine here is worth more than the both of you. Working around these machines can be very dangerous. Anyway, your job is to भाई कैसे चिल्लाया ये? watch carefully and make sure you step on the pedal at the right time. If the machine gets here, bring me the process widgets. अबे यार अब तुम दिहाड़ी कराओगे। For the modeling process, you must place unprocessed parts into the machine and then interact. When some parts get stuck while rotating, you will need to attack the rotating part to restore the machine's function. When the part's base glows, jump to complete the modeling process once. चल मैं भी जा रहा पार्ट 2 करने। ओके सेंसे। When you finish, you must retrieve successfully processed parts. Okay. एंजॉय बस स्किप मत कर। पॉपकॉर्न ले आया। ऑटो कर दे। ओके। रेड आए तो अटैक, गोल्डन आए तो जंप। हाँ तभी काम नहीं कर रहा था ये। बेसिकली जब वो प्लेटफॉर्म ग्लो करे तब जंप कर और मशीन रेड हो तो हिट कर। गॉचा। या फिर मैं अटैक स्पैम करता रहता हूँ, जब वो ग्लो करे तब जंप करता हूँ। कोई नहीं, अब मैं समझ गया। अब दोबारा करते हैं। लग रहा आज लाइट नहीं आएगी। सिल्वर रोज में या वेल्किन। मैं मैगी खाने जा रही। मैं कोई वेल्किन हो नहीं करता। ले भाई खुश रहे। Alright, I'll pass. Paimon's exhausted. He probably. मेरे को ये करने के लिए वाइटी गाइड देखनी पड़ी थी। मेरे को चार्ट देखनी पड़ी। एक वेल्किन तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। सेम। लॉल गाइड कौन देखता है? पाइमॉन ने बताया तो था। अरे मैंने सुना नहीं। स्ट्रीम के टाइम पे ज्यादा ध्यान रहता नहीं गेम पे। हाँ मैं क्या कर रहा हूँ? ये क्या कर रहा था पता नहीं। मुझे ऑप्शन दिखा, मैंने ट्राई किया। मैं गेम में सब स्किप कर देता।
You scare so easily now? Is there something worrying you? You little... The only thing we're worried about was trying to find... Sorry. इसी यहाँ भी पजल. तू क्यों टेंशन ले रहा है? तेरी एक्सप्लोरेशन तो हो जाती है ऐसे. दोस्त को कॉल करना होगा वापस एक्सप्लोर करने के लिए. You two really are inseparable. That's right. My brother simply can't stand to be away from me. It's not just Lynette. Fremine is also here. Do you still remember? Oh, you mean that diver from the House of the Hearth, right? Paimon remembers seeing him in the court of Fontaine before. Now hurry up and tell us, how did you end up as criminals this time? We fought so hard at court to prove you were innocent, but now it looks like our incredible court battle was for nothing! बर्बाद है भाई पूरी एक्ट 2 हमारी. ये रेड वे वाले मेन नीचे लाइट कैप्चर करनी रहती है और दूसरी जगह लाइट डालनी रहती है. फिर वो मीट वाली जगह पे रखता तो चेस्ट मिलता. ओह. Sadly, even the teeniest of things can land you in prison these days. I put together a street performance and used the popularity we gained from the Opera House incident to attract a big crowd. And then? Next, I invited several audience members to participate in the show. And then, with the entire audience watching, their wallet suddenly disappeared. My brother was charged with theft, and I was charged as his accomplice, having assisted him in his crime. It really isn't that bad. The missing wallets are all in the leftmost drawer of the Maison Gardienne's big filing cabinet. We just need to see how long it takes to discover them. Yep, we should be released then. In terms of the magic trick itself, I think the performance went perfectly. Leave it to Lenny to magic himself into prison. That's not the point, Lenny. The question is, what are you two really doing here? Last time I hid my identity from you, I promised that I'd tell you absolutely everything if you were angry. So I don't plan on keeping anything from you this time either. At the moment, the House of the Hearth's interests don't conflict with yours at all. We were instructed by the father of our house, the Knave, to come here and conduct an investigation. Told you so! See? Paimon guessed right! As for what we're investigating, perhaps you haven't heard, but the fortress of Meropide hides a secret. Some even say that the entire fortress exists just to protect it. The House of the Hearth has been investigating this for a very long time, trying to uncover its mysteries. Okay. But recently, all of our informants, including the ones that had infiltrated the guards, suddenly vanished. We believe that this is a direct provocation, and it's the reason why we came here. Why is the house so interested about this secret? Father has somehow managed to confirm that Focalors does not have Fontaine's gnosis. Damn. Huh? How did she manage to learn information that important? Father has her ways. Many of them are beyond our imagination, and we've never had the chance to see her at work. But we trust her conclusions. It was this information that led us to suspect that Fontaine's gnosis might be in the fortress of Meropide and is related to that secret. So I see. The gnosis again. Well, that's about it from our side. How about you two? Did Bingo! The Knave has been applying a lot of pressure. She wants to know what happened to Child, so we came here to investigate. Traveler, are we allowed to tell them? बड़ी जल्दी पूछ लिया. You've already said everything. Consider it an exchange of information. You don't need to worry too much about that. She's just asking for a report on Master Child's predicament as a means of pressuring you. Father used this situation as a pretext to negotiate with two high-ranking officials in the court of Fontaine. She actually just wants to be able to make concessions on this matter for gains elsewhere. Almost like a bargaining chip. Sometimes you need an excuse to do things you otherwise couldn't. And a harbinger is more valuable than you might imagine. Of course, it's not a complete farce. If we do manage to find out what happened to Master Child too, then diplomatic relations with Fontaine could improve, and Snezhnaya might even be able to adjust its stance a bit. I see. सही मजे ले रहे हो तुम लोग emotes का. Is it just Paimon, or does it feel like we're the
The relationship between the harbingers must be as bad as ever. भाई चाइल्ड की किसी को नहीं पड़ी यार. I wouldn't go that far. Father just has different standards than we do when it comes to what can be sacrificed for an advantage. By the way, I have a suggestion. Why don't we team up? Nice idea. Even though we have different objectives, we're both here to investigate the fortress of Meripede. It would be more efficient for us to work together. As you know, the House of the Hearth has many reasons to seek the Gnosis, but our highest priority remains resolving the prophesized crisis. You can trust us on that. I see. और ऐड कर. यार अभी सारे स्लॉट्स ना फुल हो गए हैं. I guess we just need 3 more members. फिर और स्लॉट्स ओपन हो जाएंगे. इट इज लाइक जितने मेंबर्स होंगे उतने स्लॉट्स ओपन होते रहते हैं. ओनली नेफ कैन फिक्स मी फॉर रियल. सॉरी आई मस्ट रिफ्यूज. See, I told you. Is that so? Sure enough, it won't be easy. Lenny seems to be thinking pretty hard about something. Of course he is. Lenny has been looking forward to a chance to reach an understanding with you ever since last we met. Or, I should say, we were really looking forward to teaming up with you this time. Lynette, just tell them everything, why don't you? It's okay to open up a little. If all we are doing is sharing info, but I may reconsider if things get serious. Very prudent of you, and consistent with your behavior since we first met. That's reasonable enough, and I agreed to I was prepared for the worst, but you were actually more agreeable than I anticipated. All right then, there's no time to lose. I have some information to share, so since Lynette and I arrived here, our investigation uncovered that the fortress of Meripede has a forbidden zone. Oh? Most people just clammed up and wouldn't talk, but after asking the right questions, we were able to confirm the existence of the Forbidden Zone from the guards. You should be aware of that while you're investigating. A forbidden zone? Could that be where the child disappeared to? Quite possible. Good. That's the most suspicious thing about the fortress that we know of so far. We have a few other unanswered questions, and we'll be investigating those as quickly as we can. Anyway, I hope you find our information useful at least. Oh, look at the time. You two must be hungry. You should go to the coupon cafeteria and get something to eat. I'll use my cards to get in touch with you again in the future. I see. Arey Akshay bhai, welcome back. Oh, that's just what Paimon wanted to hear. Paimon's starving after all that work today. We could Go to the coupon cafeteria to get some food. कैफे में घुमाते जाओ. यार ये वे पॉइंट है कहाँ पे? नीचे दिखा रहा है. मैं इस रोबोट पे चढ़ सकता हूँ क्या? अरे मुझे भी अंदर लेके चलो यार. मैं भी रोबोट हूँ. सत्यानाश. कैफे ऊपर है, मैं नीचे आ गया फिर से. मैं क्यों घूमने निकल पड़ता हूँ यार अपना अलग. फिर खो गया मैं. कितना पिटी मिला ओपी को. क्या? कितना पिटी पर मिला आपको सिल्वर? भाई मुझे अभी तक नहीं मिला. सैड लाइफ. अरे हांजो गॉड. पिन चार्ट देख लिया यार. 76 पिटी पे मिला है मेरे को. मुझे पता था लोग मेरे से पूछने वाले कितनी पिटी पे मिला है. इसलिए मैंने पिन चार्ट में डाल दिया. आधे लोगों ने तो इसी की वजह से नहीं पूछ रखा मेरे से. अरे मिल गया. ये रहा. यहाँ छुपा बैठा है शैतान वे पॉइंट. तू रोबोट है? यस आई एम रोबोट. एआई हूं मैं. एआई. ये जगह भूल भुलैया है फॉर रियल. सही कह रहे हो यार. अबे लिफ्ट कहाँ गई? कुछ होगा यहाँ पे लिफ्ट को नीचे बुलाने के लिए. रुको तुम. लिफ्ट को नीचे कैसे बुलाऊं मैं?
हाँ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। आजा लिफ्ट आजा। जापनीज करो यार, जापनीज। मैं आर्कॉन को इसके टाइम ना इंग्लिश रखता हूँ ताकि मैं ऊपर देख सकूं क्या चल रहा है। जापनीज लगा के ना आंखें नीचे करनी पड़ती हैं सबटाइटल्स पे कि वहां क्या चल रहा है। लिफ्ट बुलानी पड़ेगी अंदर से, यस, सुनने में मजा आएगा। चलो यार एक बार कर लेते हैं। आई होप वो डाउनलोड हो, पर बस थोड़ी देर के लिए। चाट, अरे तुम्हारी चाट पड़ी यार मैंने। पॉग मैं लॉस कर दिया 82 पिटी में। शिट मैन, क्या मिला तुम्हें? हाय हाय, नहीं नहीं, छी यक। इंग्लिश में कितनी सही आवाज है इसकी। कैसा लगा न्यूविलेट? वर्थ इट है पुल करना? मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, ये तुम ये कर सकते हो न्यूविलेट के साथ। अब देख लो वर्थ इट है कि नहीं है। मेरे लिए रीजन काफी था पुल करने के लिए। वैसे बहुत ही तगड़ा डीपीएस है भाई ये, काफी तगड़ा, अच्छा है ये। F2P फ्रेंडली भी है। बाय रिजली की जापानीज बहुत सही है। रिजली थोड़ी है मेरे पास अभी। यो मैं ज्वाइन करूं वर्ल्ड? अभी नहीं यार, अभी मैं खाली आर्कॉन क्वेस्ट कर रहा हूं। हाँ नहला दो सबको। वाह मुझे चाहिए मोना। अच्छा मोना निकली है हांजो की। You think so, mate? If I had a coupon for every fish who said that. Seems you fishies still haven't learned your lessons from your life up on the surface. If you take things at face value, then by the time you reach a dead end, you won't even know how you ended up on that road in the first place. World quest चल रही, Archon I mean. Yes. Have some advice for a soul timer. I like your attitude. I can let you in on a little something. Everyone's been telling you to just follow the rules and not cause it. But what they don't, the truth is... Huh? Hidden rules? Hidden rules. What do you mean? Not everyone knows about those rules, but whether you know them or not, once you break one, you might encounter something even worse than death. Worse than death? भाई ये तो हाइप जगा रहा है। और Really? Oh, now you're really scaring poor Paimon. Don't joke around like that. सिल्वर भाई आप लोग मजे ले न्यूविलेट से, मैं जाता हूँ गेंशिन डिलीट करने। अरे हांजो आएगा, तुम्हारी 50-50 लूज हुई ना। सेव करना स्टार्ट कर दो, लास्ट डे पे ट्राई करना पुल करने का। 10 पुल्स में काफी चांसेस रहते हैं कि आ जाए तुम्हारा। सेव करो लास्ट डे तक। Oh, you mean that if there really are hidden rules, then Child's disappearance might have something to do with that? Maybe. मैंने ओपन करके बंद कर दिया, लाइट नहीं है। हांजो ब्रो फुल सपोर्ट अभी उड़ा दो। In that case, would you tell us some hidden rules? We definitely want to avoid breaking them. Come on, mate. This is valuable information. The difference between life and death. Do you really think you can just ask and I would... क्रेडिट चाहिए भैया जी को। Paimon understands, but we don't have many credit coupons yet. Yeah, I know. Not like I'm going anywhere. Just come talk to me after you've saved enough. Moreover, लालची बंदर। Freshly caught and completely out of your element. मैं देखता हूँ कितने पिटी में न्यूविलेट मिलता। Before you've gotten a handle on your new lives. Come and find me once you've been here longer.
देखो देखो ब्रो, फुरीना पुल कर लेना, कोई नहीं. I'm usually around the rag and bone shop. Just call me V-Doc. Bye bye now. नहीं, फॉन्टेन में सही में काफी अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं. He left. Just like that. Huh. Do you think he's just trying to scare us into buying fake information from him? Is it possible that someone would just disappear? Yeah. It might be a good place to start in our investigation. Hidden rules, huh? But, like he said, we don't have any coupons and we're still not familiar with this place. Oh, there's nothing we can do about it now. Ah, we were so busy talking, we almost forgot to eat. Even if it's not the best, it's probably better while it's warm. Come on, dig in before it gets cold. इसे तो खाने से ही मतलब है भाई. दोबारा उसी लिफ्ट से जाना होगा. भाई इतना दूर दूर इन्होंने क्यों रखा है? वे पॉइंट के पास कर लेते यार. So Paimon just confirmed with the guards that our shift is set for every morning, and we're free to do whatever we want all afternoon. Okay. But it seems like वही तो यार बहुत घुमाते. True. continue working through the... Oh, and they also said that you can use coupons to skip work in the morning and free up your time. They weren't kidding. Credit coupons really can be used to do anything here. Paimon's so tired. And we'll need to wake up and go to work in the morning. Without any credit coupons, it's not like we can... Nighty-night, traveler. Paimon hopes we can keep making progress on our investigation tomorrow. मुझे लगा रेस्ट करके उठ गए ये लोग. ओ, चाइल्ड की विजन. ओके, ट्रैवलर चाइल्ड बन गया. I hear someone calling me. अरे तो वेल की आवाज है. ठीक है, चाइल्ड यहां पे आया. अच्छा, फाइट चल रही है यहां पे. बहुत देर तक खड़ा रहा ये यहां पे. फिर ये बेडरूम में आ गया. क्या था ये? Are you awake, traveler? What's wrong? You seem to have something on your mind. Did you dream about something last night? I dreamed of child, rather in a dream I was child. Is that even possible? Unless it wasn't an ordinary dream? Child's vision! So you had it with
with you this whole time? Maybe the vision connected child's consciousness to yours. Maybe I can use his vision to see everything he experienced from his perspective. Interesting. Investigation has its first major breakthrough. Good thing you brought the vision with you here. So what did you see in the dream? Do you know where child went? छोड़ के भी कहाँ आते हम लोग विजन लाइक हम लोग कहीं रहते थोड़ी है. The dream was a little hazy and I didn't see anything particularly useful. Okay. Well, hopefully it'll be a bit more helpful in the future. सिल्वर गोल्ड कैसा लग रहा है जेल में? बहुत जोर से. What's more important now is that it's the start of another new day as prisoners. Let's do our best to earn more credit coupons. What's the plan for today? Let's go work in production zone. Let's go. It's time to start working. You arrived at production zone. एक और achievement. Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a-wasting. Already on it. Could you explain the job to me again? The job is to use the machine over there to process these widgets. You step on the pedal when the timing is... जेल में मजदूरी. Yes. I'm on speed. But after so many shifts, it seems we're really getting the hang of it. बेल नहीं मिलती इधर. नहीं चाहिए ना बेल. We are undercover agents. It does seem to be getting easier. All you do is float around telling me what to do. Hey there, fellow shiftmates. I saw you finished your work, so I thought I'd come over and say hi. Oh, hey there. We've seen you before. That's right. The name's Rowan. This past few Tony days, Stark. I couldn't help but notice the new faces working nearby. I guess we were destined to meet. I've been working here for almost 15 years. Even the foreman, Grainville, always calls me Chief. Whoa, you've been working here a long time, Chief. Hey Chief, in other words, you haven't managed any improvement in 15 years. Hey, not so loud. लॉल ये तो मुंह पे बेइज्जती कर रहा है. If there's anything you'd like to know, just ask me. I know the work here in the production zone better than the back of my hand. Alright, Chief. We'll be sure to come to you first. I think I've got the work more or less down pat. We just haven't quite learned all the rules. Did you just ask about the rule? Pretty sharp for newcomers. You've already heard about the rules, huh? Who'd you hear it from? I don't think you need to know that. The hidden rules, that's what they're calling it, right? Alright. Seeing as I'm the one who came over here, you're already calling me Chief. I guess I can tell you a little. Truth is, you two keep working like this, you might be putting yourselves in danger. Okay. Wait, there's even a rule about that? What would have happened if you never told... Well, it's usually not that easy to break one on accident. The conditions of the hidden rules are usually pretty specific. But once you do break one, bad things happen. So the conditions in this case are... Work continuously in the production zone for 3 days. All you do besides eating and sleeping is just work. Then something bad will happen during lunch on the 3rd day. Huh? Like what? If I knew that, then I wouldn't be standing here talking to you. You mean, even you have never tried working 3 days like that before? There's actually a legend about this rule. They say that there was a worker who worked way harder than me. He was both efficient and eager on the job, and most other workers couldn't hold a candle to him. One time, he tried to test his limits and worked as long as he could. Then during lunch on the 3rd day, he disappeared into thin air, as if he'd evaporated. Later, some people went and asked some of his past friends about him, but they said, never heard of the guy. Oh. What the? How could that happen? What did that worker look like? A
Unfortunately, we were assigned different production zones. I never saw for myself what he looked like. Wait, are you thinking that it was... Thank you very much. Oh? You... Listen, kid. This ain't the kind of thing you should be curious about. Let me tell you, you're better off forgetting about it and looking after yourself. Now I kind of regret ever telling you. Yeah, I agree with Chief here. Primordial Sea. Yes. It sounds like a good lead to me. Nothing ventured, nothing gained. Alright, if you insist. थोड़ा पानी पी लो. इतना अंग्रेजी पढ़ के गला सूख गया होगा. टेंशन ना लो भाई, हम बॉटलें लेके बैठते हैं स्ट्रीम के टाइम. Oh, just a regular meal set. Guess Paimon shouldn't get her. What would you like to do this afternoon? Let's go work in production zone. Let's go investigate. Okay, let's see if we can find any new lead. क्या बात है, 3 अलग अलग एक्शंस दिए. AR60 पे गेम मेरे को बता रहा है कि तुम क्वेस्ट को नेविगेट कर सकते हो. वेल डन गेंशिन इम्पैक्ट. Wait. Oh, I'm always indecisive and I tend to make... What? Please. तो लग रहा है जमीन के नीचे है यार. नहीं, इस लेवल पे है ये. ओके, वहां पे है मेरा मिशन. Oh, wonderful. I was worried that you'd be busy trying to earn reward coupons all the time, but it seems like you haven't neglected your Paimon likes having more coupons, but no one wants to work all the time. सही बात है. Have you been investigating the area? No, I was just slacking off, and you happened to catch me. My brother is still obsessed with anything remotely related to the Forbidden Zone. But knowing him, it won't be long before we get more leads. Oh, before I forget, this is for you. Huh? Credit coupons? I've been here longer than you. Coupons aren't a resource in particularly short supply. What is in short supply are interesting people to talk with. Aw, that's so nice of you, Lynette. We'll be sure to make good use of these coupons then. Thanks a bunch! भाई लिनेट तो गीगा चार्ड है. जस्ट मिली, पैसे पकड़ा दे, ये लो मौज करो. ठीक है, लास्ट वाला का है हमारा. हाय, हेलो. किधर जाना है? Hey, it's the traveler and Paimon. So how you remember our names? No need to tease me, okay? I won't trip on the same step twice. Just like His Grace said, paying attention to every little detail is the key to prosperity. अच्छा Maybe अच्छा. this is the true meaning of rebirth. Happy birthday. Not just earning Thanks, credit thanks. coupons. Although आज नहीं है. ठीक है, दोबारा ऊपर जाना है. ये मुझे मिलेगा किस लेवल पे? ओके.
हाय पर नहीं बोल रहा, हाय पर बोल रहा। ओके अरे आदित्य भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। स्पॉइलर मिल रहा कि मेरे दोस्त 50-50 हार जाएंगे। एंड मैं 7 टाइम जीतेगा इन अ रो। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीतो यार। हेलो हेलो ब्राइट, हेलो। अच्छा फिर से रेस्ट करूं मैं, स्लीप। It's time for a rest. Okay, you should rest up. We woke up so early today that 6 टाइम जीत चुका, 7th है ये। नाइस। हारेगा तू आदित्य। यो योनेस ठीक है। While working the morning shift, apply for continuous working shifts with Greenville. Right, we just need. बत्तख काला जादू कर रहा हूँ। ये बत्तख कौन है भाई? बत्तख इज अ बत्तख। Get your butts in gear and get to work. Time's a wasting. Oh? What's with suddenly wanting to work so hard? You need. Sure. Let's just say we really. To investigate the hidden rules, you Paimon start working. Nice. We did well today. Let's keep it up. Hello, I'm back. Hey, Seul bro. Welcome back to the stream. बंगाली नहीं हूं नेजुको ब्रो। ये मोरा का क्या सीन है या बॉट के साथ? बट यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन, मैंने वहाँ पे सब डाल रखा है। अभी तक मैंने गेंशिन ही नहीं खोला। अच्छा काम किए हो तुम। इज दिस अ न्यू क्वेस्ट? आर्कॉन क्वेस्ट है यार ये, आर्कॉन क्वेस्ट। वॉरफेस से सीख ले, वहां रह के उसको प्रैक्टिस हो गई होगी। I didn't do it yet. नाइस, तुम्हें स्पॉइलर मिल रहा है भाई। ओके सीख लूंगा नेजुको ब्रो। मैं क्या निकालूं फिर, होता हूं या नेविलेट? जो तुम्हारा मन यार। That's it. Paimon doesn't even have the energy to talk anymore. Come on, lunch time. मैंने भी नहीं करा। स्पॉयलर्स ले लो, स्पॉयलर्स। डिड यू गेट न्यूविलेट? यस ब्रो, चेक द पेन चार्ट। न्यूविलेट मिला 76 पेटी पे। Paimon's exhausted. It's just work, work, and more work. Paimon's little body can't handle this much longer. गद्दारी कर बेब, तू वैसे भी क्या कर रही, बस उड़ रही है भाई। गाइस अगर तुमने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम। You're just realizing that now. Oh, Paimon feels a shiver going down her spine. But it doesn't seem like anything's changed at all. And we made it to the coupon cafeteria. See, are the so-called hidden rules only a rumor after all? That would just disappointment. There's no use to just guessing all day. Paimon's stomach has been grumbling the whole time. Let's just eat already. Active 65 पेटी है मेरी। अरे नाइस, सच में ट्रांसफॉर्मर उड़ गया क्या? यस चलो बाय। लास्ट वर्ल्ड क्वेस्ट प्री रिक्वायरमेंट वाला बाकी। ओके करो करो। धोखा मिलेगा आज। दिस इज There's something wrong with this meat. What do you think is going on? Is this the bad thing that Rowan was talking
talking about? Someone went missing before and now our meals have this strange meat. No, stop right there. Paimon gets what you mean, just don't say it. कुछ समझ नहीं आया मोरा का। ब्रो एक्सक्लेमेशन मोरा से तुम अपने मोरा चेक कर सकते हो। तुम्हें अगर तुम स्ट्रीम पे एक्टिव हो तुम्हें हर थोड़ी थोड़ी देर में ना कुछ मोरा पॉइंट्स मिलते रहेंगे। उन मोरा पॉइंट्स को तुम यूज़ कर सकते हो डुएल करने में, आपस में लड़ सकते हो, मोरा कमा सकते हो, गैम्बल कर सकते हो। गैम्बल से भी तुम्हें मोरा मिल सकते हो। तुम स्लॉट्स मशीन के साथ खेल सकते हो, उसमें तुम्हें बस 3 सेम इमोट्स लाने होते हैं और तुम्हें तुम्हारा जो प्राइस होता है वो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 टाइम्स तक तुम बढ़ा सकते हो। वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है कि कौन से कॉम्बिनेशन से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा वो। तो या एंड बाकी जो तुम पॉइंट्स अर्न करते हो उनसे तुम साउंड इफेक्ट चला सकते हो मेरी स्ट्रीम पे। एंड गिव अवे वगैरह भी जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन के लिए भी वो पॉइंट्स यूज होते हैं। और वो कैसे होता है ब्रो? सारे कमांड्स डिस्क्रिप्शन में है। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या देते हैं भाई? एक्सक्लेमेशन मार्क मोरा। What is it? I'm about to go report the numbers for today's free meal, so you'd better make it quick. It's about the meat in our meals. Look, does it seem normal to you? The meat? Oh, that. Looks perfectly fine to me. Totally normal. You better hurry up and chow down. ये नॉर्मल थोड़ी है भाई, गुलाबी गुलाबी मीट है यार। भाग गया वो तो इग्नोर करके। वो बेनेट वाला वेपन मिला, अक्वेलिया फवोनिया, क्या बात है। लुक्स लाइक विल हैव टू इन्वेस्टिगेट इट आवरसेल्फ। Yeah, looks like we have no other choice. Paimon was positively famished a minute ago, but now she's... The strange meat. What would you like to do this afternoon? Investigate the clues we discovered. Okay. Let's focus on investigating some more. भाई तुम वे पॉइंट के पास क्यों नहीं देते हो? हेलो, ये तो अलग ही लेवल पे है भाई वाला। न्यूविलेट कैसे इन डैमेज? बहुत तगड़ा है यार। हुताओ से बेटर है या फिर जस्ट अब देखो, हुताओ पायरो डीपीएस से काफी अच्छी, न्यूविलेट हाइड्रो डीपीएस से काफी अच्छा। दोनों अच्छे हैं यार। जस्ट देखो तुम्हारे अकाउंट में किसकी जरूरत है। न्यूविलेट की बेस्ट टीम मैं तुम्हें बता देता हूँ, देख लो। अगर तुम्हारे पास कैरेक्टर है तो तुम इसे पुल कर सकते हो। और हुताओ की भी बता देता हूँ। न्यूविलेट को लगता है न्यूविलेट, फिशल, काजुआ और जोंगली। मैं लगा लेता हूँ ना वो टीम। पता नहीं मैं क्या अजीब सी टीम लेके चल रहा हूँ तब से। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है वो। We'll be a traveling magic troupe. फिशल कहाँ गया न्यूविलेट? मतलब फिशल है, बिल्ट नहीं है, तो उसकी जगह मैं ईएम राइडन बनाऊंगा, वो यूज करूंगा। और काजुहा 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 ये रहा। Want me to come along? What shall we do? ये बेस्ट टीम है न्यूविलेट की। ईएम फिशल, ईएम बना सकते हो पर उससे बेटर है तुम नए वाले आर्टिफैक्ट सेट पे बिल्ड कर लो फिशल को।